Are you able to Are hear you me? able to hear me? Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Okay, so let's begin our class today. I think you can see my screen. So what we were actually going to discuss today was selection of sites, or the factors that actually affects the selection of site on coal-based thermal power plant. So we'll do some theoretical factors. What are the factors? And we'll try to assess that how it is relevant with some examples. And I think we discussed about one of the thermal power plant, Vindhyachal thermal power plant. So we would like to bring some examples from that plant so that you can find this study relevant. Now, if you talk about the first factor, it is the nearness to the load center. So it is always good that the power plants are made near to the load centers so that the need for transmission lines can be minimized. But this is not yani it is not a mandatory condition. It is one of the preferential condition that if it is happens, it is better, because the other option being is to supply the or you can say nearness to the source center, or what we call pit of the coal. So these are the two kind of options. Either you generate at the pit of the coal and then you transmit through grid, or you take the coal from the railways or other transportations and produce at the load center. ये दोनों ऑप्शंस होते हैं. तो जनरली यही प्रेफर किया जाता है कि लोड सेंटर जहाँ पे लोड सेंटर से मुराद, कैन somebody answer me what is the meaning of load center? सर पॉपुलेशन कंजम्पशन। Population तो consumption जहाँ है। पर सप्लाई देनी हो। हाँ, मतलब हाँ, जहाँ पे मतलब जहाँ पे कंजम्पशन है. कंजम्पशन है। यस सर। I don't know why my voice is. अच्छा, खैर ठीक है. तो जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है वो लोड सेंटर है. कुछ एग्जांपल्स बताएं आप लोग, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इंडिया के केस में. सर जैसे दिल्ली सिटी हुई। हम्म. जी. सो जनरली इस जो इंडिया के शहर हैं वो टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री सिटीज से कैटेगराइज्ड हैं. और वो बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पे हैं, किस शहर में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन टीयर वन है. उसी तरह से डिस्क्रिप्शन आई एम नॉट श्योर कितना है, बट देन वी हैव टीयर टू सिटीज़ एंड देन वी हैव टीयर थ्री सिटीज. सो जनरली अभी जो छः शहर हैं वो टीयर वन सिटीज़ में काउंट होते हैं, if I'm not wrong about this, but this like Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. This used to be earlier, but then it has included Hyderabad, Bangalore, even Pune to some extent. So then it is basically a categorization based on the number of population, and of course, population is a sort of you can say directly related with the amount of power that city would consume, is because at the end of the day it is the people who consume electricity, or it is people who go to factories, or it is people who go to the offices. So whether it's an industrial load, commercial load, a residential load, or even to feed the traffic, municipal load, all these loads are at the end of the day are connected or directly related with the population of any city or place. So this is what it means by load center. So one of the condition is it has to be load center. Now let's see whether the example which we are considering is following the suit or not. So for example, we talked about Vindhyachal super thermal power station. We have already discussed this is one of the largest one in India,
and I'm not sure. Let me just tell you how much its capacity, which is very high. It is somewhere around 4,500. So anyway, we'll get that to that. We'll get to that. But what is important is that the first condition, is it near to load center? Now, if we zoom out, we see this is in Singrauli, near Rihand, and there is a big water supply. We'll come to that. But if we talk about the load center, we see if you zoom out, you won't find any big city out there, except you get Mirzapur, Varanasi, Prayagraj. So these may be considered a little bit like tier 2 cities, but then again they are not in the tier 1 cities. And even Varanasi and Prayagraj, for example, are uh, at a good distance from that place. So in any way, even if you take it to Prayagraj or Varanasi, you got to have transmission line, good transmission lines. So the first point, if we consider this as an example, Vidyasagar super thermal power plant, then it doesn't qualify to that what we just discussed, selection of site. So, but uh, but otherwise, if we take another example like Badarpur power plant or Tihri, not Tihri, Badarpur power plant, or there is one in Noida. What is the name of thermal power plant in Noida? दादरी. क्यों भाई? वेस्ट यूपी में कौन सा है थर्मल पावर प्लांट? सर दादरी है दादरी के पास कोई थर्मल पावर प्लांट है? कोई बोल ही नहीं रहा. हैं भी लोग अब? सर दादरी के पास है सर है ना, दादरी के पास ही है. So that is also a thermal power plant. So of course that is uh, connected with, that is because it is near to load center, and near to load center is of course uh, New Delhi, and it's of course NCR. We rather say it NCR, that is National Capital Region. That does include suburb cities like Noida, Faridabad, the Ghaziabad, etc. So, in that sense, you can see that it is the Dadri power plant, thermal power plant, qualifies to follow the first point, which is nearness to the load center. However, another point is which is nearness to the load pit, pit of the coal pit. There's a paper published in some international journal of advanced technology and engineering, that is identification of factors for site selection of TPPs, thermal power plants. अगर आप इसमें देखें तो कुछ गाइडलाइंस मेंशन है जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से है. तो अगर आप इसमें देखें, देयर आर सम पॉइंट्स लाइक लोकेशन ऑफ thermal power plants are avoided within 25 kilometers of the outer periphery of the following: metropolitan cities, national parks and wildlife sanctuaries, ecologically sensitive areas like tropical forest, biosphere reserve, lakes, coastal areas rich in coral formation. So it's more of like handling the environmental concerns of the people living in metropolitan cities, animals living in national parks or wildlife sanctuaries, ecological sensitive tropical forest, coral formation. कोरल यानी जो समंदर में होते हैं, तो इन सब चीज़ों से अवॉइड, दूरी होनी चाहिए. सो 25 किलोमीटर पेरिफेरी के बाहर. द साइट शुड बी chosen in such a way that chimneys of the power plant do not fall within the approach funnel of the runways of the nearest airport. तो जो एयरपोर्ट होता है उसकी भी एक it has to have a safest distance, otherwise it can funnel uh, the pollution or heat emanating from chimneys, and it may burn the turbines of the aeroplanes. So that may cause big accidents. So then there are some more factors. Interesting to know that these sites should be chosen which are at least 500 meters away from the floodplain of the river system.
सो ये 500 मीटर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। और रीज़न है कि एक कंडीशन जो है वो है कि नदियों के करीब होना चाहिए। ठीक है, वही वाली बात जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। द विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ कोर्स कनेक्टेड विद this no, not this yeah, it's Govind Ballabh Pant Sagar, so you can say it is not far away. यहाँ से इसके पानी की जो भी नीड्स हैं वो यहाँ पे पूरी हो सकती है। सो दैट इज एन आइडियल पॉइंट फॉर फ्रॉम वाटर पर्सपेक्टिव, पानी नज़दीक होना चाहिए। अभी हम दूसरे कंडीशंस पे आते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन अ स्टीम पावर प्लांट। So you yani deny or ignore these advertisements. There is nothing advertisement here. So it is required to raise the steam in boiler, of course, water for cooling purposes such as condensers, and as a carrying medium such as disposal of ash. यानी ash को disposal के जरिए dispose करने के लिए भी water की जरूरत पड़ती है। सो एक आइडिया यहाँ पे है, इन स्टीम पावर प्लांट अप्रोक्सीमेटली 1.26 into 10 to the power 6 किलो कैलोरीज ऑफ हीट पर मेगावाट पर आवर हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द कंडेंसर। अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे लॉस हो रहा है। इन केस ऑफ डायरेक्ट सर्कुलेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर 120 meter cube of volume of water is required per megawatt per hour in this purpose. So these are some details, you can of course refer to that. But what we basically know is that supply of water is one of an important requirement. Seeing the same from this point of view, this journal point of view, because when somebody writes into journal, of course we have much bigger and good detail of that. So it has to be one of the condition of the Ministry of Environment we just discussed and Forest MOFE. It says that 500 मीटर से दूर होना चाहिए फ्लड प्लेन रिवर का। हर रिवर का एक फ्लड प्लेन होता है, जो नॉर्मली रिवर पूरे फ्लड प्लेन से होके नहीं बहती है, सिर्फ एक छोटे से हिस्से से बहती है। बट देन इट्स फ्लड प्लेन इज सम, यानी एनी टाइम इन द मानसून और सम रेनी सीजन when its water goes to the extreme of the plane, so that is known as flood plain. तो फ्लड प्लेन की लिमिट है, उससे भी 500 मीटर दूर होना चाहिए। दैट शोज दैट द थर्मल पावर प्लांट शुड नॉट अफेक्ट द दिस फ्लोरा एंड फौना और इकोलॉजी ऑफ द वाटर इटसेल्फ, क्योंकि यानी रिवर सिस्टम भी अपने आप में एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो इंसानों की ज़रूरत है, यानी क्लीनिंग, फिर उसमें मछलियाँ और भी इस तरह की चीज़ें। Location of the site are avoided in the vicinity of say 10 kilometer the places of archaeological, historical, cultural, religious, tourist importance and defense installation. ठीक है, ये भी important aspects है। एक बार लॉस हो जाए तो फिर दोबारा गेन होना नामुमकिन के करीब है। तो आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, टूरिस्ट और डिफेंस इंस्टॉलेशन से भी 10 किलोमीटर दूर बनाना चाहिए इसे। सो ये सारे कंडीशंस हैं। देन वी हैव फॉरेस्ट और प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड्स आर अवॉइडेड फॉर सेटिंग अप थर्मल पावर प्लांट और एश डिस्पोजल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। देन द चॉइस ऑफ लोकेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, कोल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेफिनेटली द कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, सिर्फ कोयला तो एक चीज़ है जो हमें रेगुलर चाहिए, बट देन वी गॉट टू हैव द कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, आयरन, कंक्रीट, सीमेंट, ठीक है, ब्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें। सो वैसे तो ये सब रेडिली अवेलेबल होते हैं बिकॉज ये और घरों वगैरह में भी यूज़ होती हैं, बट देन ऐसे ऐसे साइट्स जहाँ पे हिली एरियाज हों या माउंटेन्स हों तो मुश्किल हो जाती है। द लैंड फॉर हाउसिंग इज टेकन एट 0.4 किलोमीटर स्क्वायर पर प्रोजेक्ट, यानी हाउसिंग के लिए land requirement for thermal power plant is 0.2 kilometer square per kilometer square for 100 megawatt. So एक ये thumb rules हैं. Of course this has must have taken from some papers that has gone through the detailed calculation और उसके results यहाँ पे cited है। उसी तरह से ऐश पॉन्ड के लिए भी ज़रूरत होगी। इस इमेज से मेरे ख्याल से हम ऐश को समझ सकते हैं, द ऐश रिक्वायरमेंट।
ये जो फोटो गैलरी है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो जो भी काला काला दिख रहा है, ये पूरा ऐश रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, अच्छा खासा एरिया है जो ऐश डिस्पोजल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर सम व्हाट वी कॉल कन्वेयर बेल्ट्स। ठीक है, ये ऊपर नीचे जो जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म की तरह दिख रहा है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरह से, ये असल में यानी उसे क्या कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट से कोयला जो है पुलवराइज हो रहा है, फिर उसको यानी उसको भी सेग्रीगेट करते हैं, पुलवराइज करते हैं, और फिर वो बॉयलर में जाता है। फिर ऐश उसके आउट यानी जाहिर सी बात है, जलने के बाद फिर जो ऐश होता है उसको भी इसी तरह से बाहर निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए, रेलवे लाइन भी उसके करीब है। इट्स बिकॉज यू वांट टू टेक द कोल फ्रॉम द, कितना भी नज़दीक हो तब भी 10 से 50 किलोमीटर फिर भी दूर होगा। जो क्या कहते हैं, पिट एकदम पिट के हेड पे तो लगाएंगे नहीं, तो एक डिस्टेंस उससे भी मेंटेन करना है। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही हैवी इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट यानी आई मीन इंस्टॉलेशन, हैवी इंस्टॉलेशन है पूरा का पूरा जो पावर प्लांट है। तो इतना हैवी इंस्टॉलेशन आप किसी पिट के करीब नहीं कर सकते, बिकॉज देन इट हैज़ कॉम्प्लिकेशन इन शिफ्टिंग ऑफ द लैंड। ठीक है, ज़मीन ही खिसक सकती है या दब सकती है, बिकॉज ज़मीन के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली टेक्स द thermal power plant even away from the what we call pit, coal pit। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है हमें समझना कि ज़रूरी नहीं कि सारी रिक्वायरमेंट एक ही कोल पिट से हो जाए, हो सकता है हमें कहीं और से भी कोयला मंगवाना पड़े। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि कार्बन क्रेडिट वाला इशू हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया के जो कोयले हैं उनकी क्लोरोफिक वैल्यू बेस्ट नहीं है। दे आर गुड बट दे आर नॉट बेस्ट। तो जब बेस्ट नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपके धुआं ज़्यादा निकलता है कंपेरेटिवली जितनी की एनर्जी निकले, और धुआं निकलने से आपका जो कार्बन क्रेडिट की कैपिंग है वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे कोयले इस्तेमाल करें जो कम से कम धुआं निकाले, जिससे कि हमारी जो कार्बन कैपिंग है, कार्बन क्रेडिट की कैपिंग है, वो कम रहे, यानी वो एग्जॉस्ट ना हो। क्योंकि अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर यानी हमें एक्स्ट्रा उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान देना है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ इफ वी जस्ट अ मिनट, which was important. Then the third point is availability of coal. इनफैक्ट जो फैक्टर 1 है और फैक्टर 3 है, आप समझ सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पे हैं, लोड सेंटर और अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। कोयला जनरली ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे आप जानते हैं कोयला बनता कैसे है, कि जो पेड़ और जो कार्बन रिच मटेरियल्स हैं ज़मीन में हज़ारों साल दबने के बाद या और भी ज़्यादा, फिर वो कोयला यानी जो उनका मटेरियल है, जो कार्बन है उसका, कोयला में बदल जाता है। उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो या ऑयल में बन जाता है या गैस में बन जाता है। और जो कोयला हो या ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ये सब के सब ज़मीन के अंदर से मिलते हैं हमारे लिए। बट द पॉइंट इज, ऐसी जगहों पे जनरली ये पाया गया है कि वहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन नहीं रहती, क्योंकि पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए मैदान जो है, मैदान यानी फील्ड्स जो है, प्लेन्स जो हैं, वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। वहाँ पानी की ज़रूरत मिल जाती है, और उतना यानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है या इंडस्ट्रीज जो है आराम से डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर पहाड़ियों पे, चाहे वो छोटी ही पहाड़ियाँ हों क्यों ना हो, वहाँ के लिए मुश्किल होता है ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन करना। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी
पहाड़ी एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द प्लेन्स. सो ये दोनों एक दूसरे के आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्ररी हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग है. जहाँ पे लोड सेंटर है वहाँ पे कोयला नहीं है, और जहाँ पे कोयला है वहाँ पे लोड सेंटर नहीं है. ऐसा बहुत कम ही सिचुएशन पाया जा सकता है जहाँ पे कि लोड सेंटर भी हो और कोयला भी हो. सो एनीवे, a huge amount of coal is required for raising the steam, 20,000 tons per day for 2000 megawatt station. Since the government policy is to use only low grade coal with 30 to 40% ash content for power generation purposes, the steam power plant should be located near the coal mines. Okay, so now we can talk about load requirement. The land is required not only for setting up the plant but for other purposes such as staff colony, coal storage, ash disposal. And for the data is that for a 2000 megawatt plant, the land requirement may be of the order of 200 to 250 acres. So एक अच्छी बात ये मानी जा सकती है कि चूंकि ये इसे शहर से बाहर बनाना है 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द border of the metropolitan or other cities. So the land cost would not definitely be as high as in the cities. So this could be a, but anyway, it has to cost something. So that cost has to be borne by the authorities if it is government project. So government has to bear it. If it is a private, then the private company has to bear it. So as the cost of the land adds up to the final cost of the plant, it should be available at a reasonable price. Land should be also available for future extension. ठीक है. उसके बाद यानी मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं फ्यूचर एक्सटेंशन का क्या मतलब है. That sometime we want to make more boilers, more of the turbines, more generators, or you may want to add more of capacity to that. Even if you take the example which we just took, you will get to know that this was installed capacity. इसकी सारी कैपेसिटी एकदम नहीं आई है बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ी है. So it has been extended over a period of time. ठीक है. Number of plants 23. No, I don't think it is NTPC instead of that. ये पूरे NTPC की बात हो रही है. um, okay. Anyway, it even for this example it has increased from इनिशियली ये 100 मेगावाट से शुरू हुआ, फिर एक एक करके बढ़ता हुआ और ये 4,500 मेगावाट तक पहुंचा. सो दैट इज वेयर द इशू ऑफ एक्सटेंशन कम्स कि आपके पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि वक्त के साथ जो है उसे आप बढ़ाते जाएं. ठीक है. दिस इज व्हाट इट मींस बाय फ्यूचर एक्सटेंशन. देन अनदर फैक्टर विच फैक्टर 5 इज द टाइप ऑफ लैंड. जैसे हमने बात की थी बियरिंग कैपेसिटी. It should have a good bearing capacity since it is to withstand not only the dead load. Dead load means, वो बताएगा dead load का क्या मतलब है. What is dead load? Sir, which is not in use. नहीं. Which is not in use. You said this. So can you show the PDF again? Hmm? So can you show the PDF again? Okay. The coal,
Land should be of good bearing capacity since it is to withstand not only the dead load of the plant but also the पर वो जो force. मतलब स्टैटिक पहले लोड, दबा हुआ है वो स्ट्रक्चर का लोड, हाँ, स्ट्रक्चर का लोड। स्ट्रक्चर का लोड, हाँ, यानी स्टैटिक एक लोड, एक लोड जैसे आप एक जगह बैठ गए, एक जगह बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, सो दैट इज डेड लोड। ओके। और एक जगह आप एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उछल के हवा में और फिर कूद रहे हैं जमीन पे, ठीक है ना, दोनों के लोड में फर्क हो जाएगा ना, दोनों के लोड में फर्क हो जाएगा। एक जो है जो डेड लोड है और एक है जिसपे कि कुछ एक्स्ट्रा और एक्सटर्नल फोर्सेस भी काम कर रही हैं, ठीक है, यानी डायनेमिक जो लोड है। यानी तो dead load, it has to not only withstand the dead load, that is the load because of its gravity, but it also has to bear the forces transmitted to the foundation due to the operation of the plant. And this total load may amount to about 7 kilogram per square centimeter. ठीक है, तो ये उसकी डेंसिटी है कि यानी 1 सेंटीमीटर पे 7 किलो का वेट लग रहा है। सो दिस इज अ हाई अमाउंट ऑफ वेट ऑन द ग्राउंड। नाउ अगर वो लैंड सख्त नहीं हुआ और सॉइल टेस्टिंग होती है किसी भी जगह की, किसी भी प्रोजेक्ट में, इवन नॉर्मल घर बनाने के लिए भी, सो दैट हम ये समझ सकें कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसी हिसाब से हम कितने मंजिल बनाना है या उसका फाउंडेशन कितना चौड़ा या उसमें कितनी ज़्यादा कंक्रीट भर सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स सिविल इंजीनियरिंग में की जाती हैं, एस्टिमेट किया जाता है, उसकी लैंड बेयरिंग कैपेसिटी देखी जाती है और उसी हिसाब से फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग अप्रूव की जाती है। सो we need the type of land is important because the land should be reasonably level and not low lying, यानी उसको फिर इतना ऊपर भी होना चाहिए कि वो, यानी ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में हो, यानी पानी के नीचे हो, यानी ज़मीनी सतह या सी लेवल के नीचे हो, या इतना नीचे हो कि उसमें अ, बाहर से बारिश या इस तरह की चीज़ों में वो सिंक की तरह काम करे। इट हैज़ टू बी रीजनेबली लेवल लेवल, ठीक है, यानी इन सिंपल अंडरस्टैंडिंग जनरली जो आसपास की जो लेवल है उससे ऊंचाई होना चाहिए। So that is one of the factors. Factor 5, type of land. Then we have transportation facilities. The facilities must be available for transportation of heavy equipments and fuels. For example, रेलवे स्टेशन, ठीक है, यानी वो नियर रेलवे स्टेशन होना चाहिए। और कई बार ये पाया जाता है कि रेलवे स्टेशन ना भी हो तो रेलवे स्टेशन बनाया जाता है। आप देखेंगे भाखड़ा नांगल जो कहाँ पे, हिमाचल में, तो देखते हैं वहाँ पे भी स्टेशन बनाया गया, इसी नाम से ही है वो, नांगल के नाम से ही, डैम के नाम से ही। सो these stations are important, not necessarily कि वहाँ पे लोग हों, बट ये कि वहाँ पे it's a good amount of transportation has to be done. So it could be railway, but not necessarily कि हर जगह रेलवे पहुंच ही जाए। So ऐसे केसेस में हम we can have transportation facilities, other transportation facilities. So this is an important factor. अभी जब हम उसको पढ़ेंगे हाइड्रो को, तो हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ किस हद तक हमारे इस डिसीजन पे यानी अफेक्ट कर सकती हैं कि हम वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बनाए भी या नहीं बनाए। कई जगह हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कुड बी अ reason for not having it. So this transportation becomes more, the importance of it becomes more accentuated in other power plants. But here, of course, is not that big deal. या तो पिट के नज़दीक है या फिर लोड सेंटर के नज़दीक है, और दोनों जगहों पे इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि हिली एरिया एक अलग एस्पेक्ट होता है और माउंटेन्स अलग होते हैं। हिली एरियाज में छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, जैसा कि आप इस ये जो दिल्ली से निकल के उदयपुर की तरफ जो रेंज जाती है, अरावली रेंज,
तो हिल 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 कह सकते हैं इन्हें, but they are not mountains. So when we say mountains, mountains are generally of what we understand by like Shimla and Uttarakhand, etc. So Himachal or Uttarakhand mountain ranges. So that's that we have to understand. Then we have labor supplies, skilled and unskilled laborers. ठीक है, स्किल्ड यानी जो ऐसे ऐसी ऐसे इक्विपमेंट्स जिसमें स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत हो। ज़ाहिर बात है, एक आदमी जो बिल्डिंग बना रहा है और एक आदमी जो जनरेटर बना रहा है, वो सेम स्किल तो नहीं है, अलग अलग स्किल सेट है उसमें। और या फिर जो इंस्टॉल ही कर रहा है इसको, तो उन दोनों में फ़र्क है। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स फॉर इट्स वन टाइम installment or regular operation, skilled and unskilled laborers has to be present there, and it says at a reasonable rate near the side of the plant. तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो अक्सर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो लोड सेंटर के नज़दीक हैं, वहाँ पे लेबर सप्लाईज भी आसानी से मिल जाती हैं। स्पेशली आज का जो एक सिस्टम है हम लोग इसमें रह रहे हैं, दैट सिस्टम एक्चुअली इंश्योर्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लिव एट वन प्लेस। और इसीलिए आप देखेंगे कि ओपनली या सीक्रेटली ऐसी पॉलिसीज बनती रहती हैं जिससे कि लोग अपने गाँव को छोड़ के और शहरों में जाके रहना पसंद करते हैं। यानी उसमें बहुत सी चीज़ें लाइफस्टाइल से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी रिलेटेड हैं, बट बहुत बार जो है ये जो लाइफस्टाइल और या जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ये गांव में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। बट देन समटाइम, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग समटाइम्स इट्स सीक्रेटली इट इज डन, एंड दैट इज डन बिकॉज टू बेनिफिट द बेनिफिट द कैपिटलिस्ट्स। और उस वजह से कि जब आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे नेचुरली जो सप्लाई और डिमांड का इक्वेशन है वो लेबर्स के फेवर में नहीं रहेगा, बल्कि जो लेबरर्स को काम करवा रहे हैं यानी कैपिटलिस्ट के फेवर में रहेगा। तो बहरहाल ये एक एस्पेक्ट है जो मेरे ख्याल से हमें ये भी समझना चाहिए दैट अंडर पेड जो है एक एम्प्लॉई, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लेबर कहीं मिलने लगे, क्योंकि लोग जो है कम पे करके, यानी लोग जो है कम पे पे भी तैयार हो जाते हैं। सो ये एक अलग एस्पेक्ट है। अगर हम इसको फिनेंशियल एस्पेक्ट से देखेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह रहें, जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा हो जिनके पास पहले से ही पैसा है। लेकिन अगर आप इसको ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखेंगे और इस एस्पेक्ट से देखेंगे कि केयर फॉर द पीपल एज वेल, तो उस हिसाब से ये सही नहीं है। यानी financial aspects say it could be good, but from humanitarian aspect this is not good, because then people get underpaid or even unemployed। और जो benefit होता है, यानी जो रीजनेबल रेट की बात आई है इसमें, जिन जो लोग यानी इन्वेस्ट करते हैं पैसा, अच्छा खासा पैसा, उनको इससे फ़ायदा होता है। ये एक फूड फॉर थॉट है, आप इस पे यू कैन रियली फर्दर थिंक अबाउट इट एंड यू कैन ऑल्सो रीच टू सम कंक्लूजन। अगर हम फैक्टर नंबर 8 की बात करें, सो इट इज अबाउट एश डिस्पोजल। एंड एश इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्टीम, यानी कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट। एंड विद लो ग्रेड कोल इट मे बी 3 to 5 tons per day, and some suitable means for disposal of ash should be thought of. It may be purchased by building contractors or it can be used for brick making near the plant site। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है ब्रिक मेकिंग का, और आप देख रहे होंगे कि ये हल्का होता है और मजबूत भी होता है, और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए ये बड़ा ही सुटेबल रहता है। सो इफ द साइट इज नियर द कोल माइन इट कैन बी डम्प्ड इनटू द डिसयूज्ड माइंस। ये भी हो सकता है कि जहाँ से कोयला निकाला जा चुका है वहाँ पे अब इस ऐश को भरा जा सके। दिस कुड ऑल्सो बी ऑप्शन, बट दिस इज possible only when mines are close to the
pit center. I remember something of this sort in a place called Raigad in Chhattisgarh, where we have a Jindal power plant. And if I'm not wrong, it is also probably 2 to 3,000 megawatt project, and it is also simply thermal power plant. और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इसमें जो कोल पिट है वहाँ से डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट्स हैं जो कोयले को थोड़ा सा लंबा है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से अवॉइड ही कर देता है। तो ये कोल पिट से डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट से उठाते हैं और सीधे पावर प्लांट में भेजते हैं और ऐश को वापस उसी माइंस में रख देते हैं, भर देते हैं। तो ये एक टेक्निक है, जाहिर सी बात है इससे जो है जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों साइड से बच रहा है। So in case of, so this is one of the option of the ash disposal. In case of site located near a river, sea or lake, ash can be dumped into it. If the wasteland is available near the site, then the area of 40 hectare excavated to a depth of 6.5 meters will be required per year for 22,000 megawatt plant. So that's the data कि यानी 5.5 मीटर खोदने के बाद 40 हेक्टेयर हर साल के लिए चाहिए अगर वो 2000 मेगावाट प्लांट है। ये एक डेटा है। तो 40 हेक्टेयर भी ज़मीन कम नहीं होती। 6.5 मीटर यानी एक डंपिंग ग्राउंड है जिसे आप खोद सकते हैं। बट देन व्हाट विल हैपन टू दैट प्लेस, उस जगह पे क्या बनेगा, यानी क्या वो वहाँ पे पार्क बन सकता है या कोई बिल्डिंग बन सकती है, दैट ऑफ कोर्स इज अ फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन। तो बट दिस कुड बी एन ऑप्शन। I think the last factor is the factor of same what we discussed about the nearness to load center, और ये उसके just opposite है, conflicting interest है दोनों points के। Distance from polluted area, populated area is because it will pollute, and pollution near population is of course danger to the inhabitants of that populated area. Since most of the modern generating stations employ pulverized fuel residue and fume from them are quite unhealthy, or the site for the power station should be away from the populated areas. All the factors are given above, but the first one helps us to select the site for thermal power station away from the towns. Nowadays, more importance is given to the facilities for generation than those of distribution, and site for the steam power plants near riverside, where ample water is supplied. Studies have revealed that it is more economical to locate the steam power plant at or near pithead rather than at the load center. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के लिए लोड सेंटर के करीब रखना से ज़्यादा पिट सेंटर के करीब रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रांसमिशन उतना बड़ा इशू नहीं है जितना कि ट्रांसपोर्टेशन है। बट एक और डेटा है, फॉर लोड एक्सीडिंग 200 मेगावाट एट 220 किलोवोल्ट and 375 megawatt at 400 kV transmission of electrical energy is more economical in comparison to transport of coal for a distance of order 200 to 700 kilometers and even more. तो अब ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ पॉइंट है कि दोनों में किस पॉइंट पे वो ट्रेड ऑफ दूसरी तरफ झुक जाता है कि अगर लोड जो है 200 मेगावाट से ज़्यादा है, ट्रांसमिशन जो है 220 किलोवोल्ट से ज़्यादा है, 375 मेगावाट 400 kV ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मोर इकोनॉमिकल। तो ये लोड है फॉर लोड एक्सीडिंग 200 मेगावाट एंड 220 किलोवोल्ट एंड 375 मेगावाट, यानी एक पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट से हैं 200 मेगावाट 220 किलोवोल्ट या 375 मेगावाट एट 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन। तो फिर ये
इकोनॉमिकल हो जाता है अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है 100 से 700 किलोमीटर से ज़्यादा हो. सो दिस इज जस्ट क्योंकि ट्रांस डिस्टेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग के सामने जो है डिस्टेंस छोटा हो जाता है या कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बिकम्स लेसर एज कंपेयर टू द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द coal. So anyway, these are the factors before us which we discussed today. If you have any question, you can ask. Let me see if we have something more in this study. Availability of resources पढ़ लिया हमने, economical impact पढ़ लिया, environmental concern we have already discussed. Social concerns भी होते हैं क्या, job creation, public acceptance, number of relocation, distance from public area. Then accessibility हमने पढ़ लिया, road, rail, airport accessibility, transmission grid, अर्बन एरिया एक्सेसिबिलिटी. इसी इन्हीं पॉइंट्स को इस पेपर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया गया है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ much important for us. So, but anyway, for reference, I can give this paper as well. So that brings us to end of today's class.